Hi everyone, welcome to TechMaestro again, and this is our day 32, and we are live with day 32 session today. And thank you so much for joining in so far. And first of all, what I'll say is, uh, congratulations on completing milestone 2. I have basically started evaluating people, and there are almost 20 plus people who have completed the milestone 2, and almost all of them are there in this live or solving question every single day. So I'm very happy for all the people, and I'll start sending the email today, maybe today or maybe tomorrow. But yes, you'll get the email pretty soon. Apart from that, again, thank you so much for joining in this live session. If you have not done it, please click on the subscribe button and the bell icon so that you get notification of all the live sessions that we do right when we start it. Okay, without any delay, let's get started. And before that, I see there are a lot of regular people are there. Hi, Vandit. Good to see you. I think this is your first day. Hi, Apurva, Sandeep, Vipul. Hi, Manas. Hi, Vishal. Hi, Ritik. Hi, Manisha. Good to see all of you again. And without any delay, let's get started. Before that, in the meantime, that I start my screen sharing. How did you like today's question? Hi Akash. How did you find today's question, guys? So I'll start with the query that Vandit has. Vandit has is how can I enroll for the 75 days challenge? So all you have to do is just fill the form. There is a form, registration form that you need to fill, and if all you have to do is just start solving questions, nothing else. First of all, you'll not get any email from TechMaestro team or me stating that you have enrolled. You just start solving question, and all you have to do is just fill your progress form every single day and participate in this live session, or talk to people in our community if you are feeling problem, or help them whoever is stuck with any problem or any question or any sort of problem, not just question. And again, you have to share it on LinkedIn as well. So apart from that, there is no other requirement or no other way of enrolling. So let's get started with today's question. The first question that we have is binary tree level order traversal. So yesterday we were talking about using level order traversal multiple times. We talked about it multiple times, but let's talk about what exactly is it today. So I see a lot of you are able to solve 3 out of 4 questions. Let's see, like why is that? We'll try to decode all the problems. In fact, the last question is not very tricky. Maybe the solutions will, once you see the solution, you'll be able to relate or solve this question yourself after that. Okay. Now, level order traversal. होता क्या है level order traversal? What exactly is the question? So you have been given a binary tree. All you have to do is print nodes at a level wise. Basically, 3 is level 0. Then its first child root is level 0. Its first child is level 1, 9, 20. Then their children are basically level 2, 15, 7. Let's say if there was more, level 4, level 5, level 6, and so on. Basically, we have to go start from root, explore all its children first, then explore all their children, then explore all their children, like that, right? So what is the other name of level order traversal? It's a very well known thing. So the other name of this question, or other name of this type of traversal, is BFS. I think you would have heard of breadth first search, BFS. So level order traversal in a tree is nothing but a BFS. So the first question that I have for you is, which data structure do you use for BFS? Right. So you can basically, like I said, what we need to do is, let me take a step back before I share that with everyone. So what we need to do is, first we need to take 3.
then 9 20, then 15 7. Let's say 9 also had some children, 10 10 and 11. Then I would have gone to 10 11 15 and 7, then their children, and so on. So अभी तक हमने जितने भी लेवल जितने भी ट्रेवर्सल किए थे, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑल ऑफ दैट वी वर ट्राइंग टू गो फॉर द डेप्थ फर्स्ट, कि 3 के 5 बाद 9, फिर 11, फिर 10, फिर सो ऑन, एंड देन व्हेन वी कम बैक, देन हम राइट जाते थे, पहले पूरा लेफ्ट एक्सप्लोर करने के बाद राइट जाते थे, राइट? हियर we don't have that luxury, or we don't have that freedom. We have to basically go to left and right at the same time, right? So this is what level order traversal is. Now what we need to do is 3, उसके बाद right away 9 and 20 दोनों explore करने हैं, फिर 9 के child explore करने हैं, 20 के child explore करने हैं, फिर 15 करना है, फिर 7 करना है, right? If you see, there is a pattern. All I have to do is 3, उसके दोनों child को explore करना है. Now I have to take out 9 out, then 20 out, then 15 out, then 7 out. बेसिकली मैं इंसर्ट कर रहा हूँ बैक से, एंड फीफो काइंड ऑफ ऑर्डर है ये, कि मैंने 3 के बाद 9 20 इंसर्ट किया, तो 9 पहले निकलेगा, फिर 20 निकलेगा, देन 15 7 7 को इंसर्ट करेंगे, 15 पहले निकलेगा, 7 पहले बाद में निकलेगा, राइट? दिस इज अ फीफो ऑर्डरिंग. तो फीफो के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है? बेसिकली वी फॉर फीफो वी यूज क्यू. तो यहाँ पे हम लोग क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे. किसी भी बीएफएस में यू कैन जस्ट कीप दैट इन योर मेमोरी, ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका सोचने के लिए, बट यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाई क्यू. वो अभी जो मैंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का, वो एग्जैक्टली वही रीजन है. बट यूजिंग क्यू यू कैन एक्चुअली डू बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ब्रेथ फर्स्ट सर्च, सॉरी, बीएफएस. So what exactly will we do? Basically we'll start from the root को क्यू में डालेंगे, एंड जब तक क्यू खत्म नहीं हो जाती, एक आइटम बाहर निकालेंगे क्यू से, फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द क्यू से, एंड देन बेसिकली स्टार्ट पुटिंग चिल्ड्रन एट द एंड ऑफ द क्यू. दैट्स इट. ऑल वी हैव टू डू इज क्यू से निकाला, उसके चिल्ड्रन डाले, फिर एक और निकाला, चिल्ड्रन डाले, एक और निकाला, चिल्ड्रन डाले. दैट्स इट. That's all we have to do. Now here, if you see in the question, it is given that we have to separate out level as well. तो वो कैसे करोगे? How exactly will you handle separation of level using Q? Akash, Apurva, Sandeep, I think let's discuss this question, and we'll come to that question as well. But some will come to that. Don't worry about it. So my question was, how will you handle level separately? So basically, what we do is here what we do is delimiter is what Vipul is saying, but how will you insert that delimiter is also very tricky. So what we do is basically we just modify the BFS in a very small fashion. बस छोटा सा modification करना है कि जब आप whenever you are into that while loop, while queue is not empty, you just iterate over the entire queue till the time for the size of the queue initially. मतलब जैसे फर्स्ट लेवल पे, वापस से यहाँ आते हैं, फर्स्ट लेवल पे क्यू का साइज होगा 1, देन 2, देन अगेन 2, यहाँ पे 2 है तो 2 होगा, 4 होता तो 4, देन 8, देन 16, राइट? तो हम लोग बस यही करेंगे, एंड आई थिंक इट इज मोर देन एनफ. नाउ इफ it'll make much more sense from the code. तो अगर आप कोड देखोगे तो व्हाट आई एम डूइंग इज कि Q1 एक क्यू बनाया मैंने, क्यू में सबसे पहले मैंने रूट ऐड कर दिया. दैट्स इट. ऑल आई एम डूइंग इज ऐड रूट टू द क्यू. नाउ टिल द टाइम क्यू इज नॉट एम्प्टी, सबसे पहले मैंने क्या किया, क्यू डॉट साइज निकाला. अब ये मेरा इटरेटर है, इतनी बार मुझे इटरेट करना है. दैट्स इट. इस लेवल में इतने नंबर ऑफ नोड्स है. दैट्स ऑल आई नो. सो दिस इज व्हाट आई कैन डू, एंड देन फॉर लूप लगा दूं. दैट्स इट. इफ निकाला, लेफ्ट राइट सम, लेफ्ट एंड राइट एंट्री कर दिया, निकाला, लेफ्ट राइट एंट्री कर दिया, निकाला, लेफ्ट राइट एंट्री कर दिया. दैट्स इट. इज दिस क्लियर? लाइक ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? क्योंकि दिस लेवलिंग
wise thing is going to be useful in a lot of question. You can actually use this a lot of time, sorry, in lot of places. So it's very necessary कि ये समझ आए कि हाँ exactly क्या है. Okay, seems like it is clear. तो let's move to the question number 2. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? बाय द वे, सिंस देयर इज लूप के अंदर लूप, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन? Correct, Sandeep. How about everyone else? Like, what is the time complexity of the solution, guys? That is correct, people. And the reason is, even when there is a loop के अंदर loop, like while loop में एक और loop है for loop, generally it becomes n square. मतलब ये लगता है कि there is a nested loop, so it will become n square. But that is not the case because we are still traversing the entire tree, the node of the tree only once, not more than once. So इसलिए the time complexity of this is actually of n. Okay, moving on to the second question that we have. Basically, it's an modified version of the previous question. So the question is, basically you have to do level order traversal, but in a zigzag fashion. Zigzag क्या है? पहले 3, then 29, then 5 7, 15 7, then first like left to right, then right to left, then left to right, then right to left, then left to right, then right to left. ऐसे करना है. So यही क्वेश्चन है. लेट्स सी. लास्ट से बहुत ज्यादा सिमिलर है. बीएफए नहीं है, बीएफएस है एक्चुअली. विल डू बीएफएस. बहुत ज्यादा सिमिलर क्वेश्चन ही है ये. नाउ हाउ विल यू हैंडल द zigzagging फ्लो? हाउ विल यू हैंडल द zigzag इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट? बीएफएस में क्या कर रहे थे? बस ऐड कर रहे थे, निकाल रहे थे. So for this, actually, there are two type of solutions. You can actually do it using queues as well. You can actually do it using stack as well. And I am going to discuss or build on the previous question itself, क्योंकि it will be better if we build on the previous solution itself. Otherwise, थोड़ा confusing भी हो सकता है. Plus, more than confusing, it's better to understand queue approach, and stack you can try yourself. So OD1 type approach ही use करेंगे, like everybody is saying. So now what exactly will we do? कि exactly same तरीके से जो हम last iterate कर रहे थे वही करेंगे. Now instead of basically, okay, let me take a step back. यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं. हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट बनाया, उस लेवल की सारी आइटम्स लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, राइट? लेवल पे जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी नोट्स हैं, सारे मैं लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ. दैट्स ऑल आई एम डूइंग, राइट? नाउ इंस्टेड ऑफ ऑल आई नीड टू डू इज, देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट, और दो तरीके हैं. सो यहाँ बेसिकली इफ यू सॉरी, so now I am doing add sublist, and at the last I am adding that sublist to my top level list, जो भी मेरा resultant list है, wrap list. Now either I can keep a check कि if it is odd, don't do anything. If it is even, just reverse the sublist. And sublist को reverse करने में on लगेगा. Anyways कोई भी additional time complexity नहीं है वो, right? So I can do that. So the first possibility is, why before adding the result or array to the resultant main array, we can reverse the array, right? The second way is, इसमें actually 2n लग रहा है, 2 बार iterate कर रहे हैं. एक दूसरा आसान तरीका क्या है कि मैं एक बार तो लेफ्ट टू राइट फिल करूं अपने रिजल्ट को, और एक बार लेफ्ट राइट टू लेफ्ट करूं. सो फॉर एग्जांपल मैंने पहले 3 डाल दिया, नेक्स्ट इज राइट टू लेफ्ट जाना है मुझे, तो मैं सबसे पहले लास्ट में इंसर्ट करूंगा, फिर सेकंड लास्ट में इंसर्ट करूंगा, देन एक और बार नीचे जाऊंगा. अब मैं 0 1 2 पे इंसर्ट करूंगा, देन नीचे जाऊंगा 2 1 0 पे इंसर्ट करूंगा.
तो मेरा रिजल्ट उसी तरीके से स्टोर हो रहा है जैसे मेरे को चाहिए, zigzag तरीके से. Is that clear? A quick yes no guys. Are both these method clear? Like पहला तो बहुत ही आसान है, बस रिवर्स कर दो ऐड करने से पहले. सेकंड वाले में भी आसानी है, बस वो थोड़ा सा आपको चेंज करना है. ओके, नाउ लेट्स सी द कोड. अगर आप देखोगे कोड भी काफी आसानी है इसका. यहाँ पे मैंने कौन से वाला अप्रोच यूज किया है? मैंने अप्रोच यूज किया है रिवर्स करने वाला. देर इज ऑब्वियसली देर इज अ बेटर सोल्यूशन ऑफ लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट इंसर्ट करने वाला, बट यहाँ पे रिवर्स वाला किया हुआ है मैंने. कि इंसर्ट किया मैंने अपनी लेवल लेवल वाइज पूरी नोड लिस्ट बनाई, एंड देन बिफोर एडिंग दैट टू माय रिजल्टेंट लिस्ट, रिटर्नेबल लिस्ट, I just either reverse it or leave it as is. That's it. Is that clear, guys? Is the code clear as well? A quick yes, no? Okay, awesome. Let's move to the next question that we have. Binary search iterator. This is a really, really good question. I really like this question. करना क्या है? इटरेटर क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं. इटरेटर कुछ नहीं होता. जैसे हम लोग फोर लूप इटरेट करते हैं किसी भी लिस्ट पे, किसी भी टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पे. इटरेटर हैज टू फंक्शनैलिटी, has next and next. Has next will tell you do I have a next element in this data structure, and next will tell you what that element is. Has next simple yes no true कर return करता है, and next actual value return करता है उसकी. So for example if we start 7 पहले होगा, sorry पहले 3 return होगा, फिर 7 return होगा, then 9 return होगा, then 15, then 20. At 20 my has next will return false. उससे पहले हमेशा true return करेगा. So all we have to do is in order traversal में मेरे को एक iterator बनाना है. ठीक है? I hope question is clear to everyone. तो ब्रूट फोर्स देखते हैं क्या है. ब्रूट फोर्स क्या कर सकता हूँ मैं? अपना सिंपल एक लिस्ट बना सकता हूँ, या एरे ऑफ एरे कंस्ट्रक्ट कर लिया मैंने, अपने कंस्ट्रक्टर में ही एरे बना के रख लिया एक बार इटरेट करके. एंड whenever there is a query की has next, अच्छा मैं अभी i equals to 0 पे हूँ, साइज ग्रेटर है, ट्रू. i equals to x पे हूँ, साइज उस साइज पे पहुंच गया तो फॉल्स. एंड नेक्स्ट में जस्ट रिटर्न a of I या फिर in order of I. That's all. Is this clear? Brute force solution, like just store the entire result in an array or a list and just use internal iterator or जो भी मतलब just build a proper simple variable based interrupt iterator. Is it clear? A quick yes no. And what is the time complexity of this solution? Time and space both. Sandeep, there is a better solution, and we'll discuss a better solution just after this. So the time and space complexity of this is actually of and both. Right? Now let's try to optimize this. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा इटरेट करके स्टोर कर रहे हैं, है ना? तो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग एंटायर ट्री, हम लोग इतना स्टोर कर लें कि हम लोग अपने सक्सेसर पे जा सकते हैं. राइट? अगर मैं कभी भी अपने इन ऑर्डर सक्सेसर पे जा पाऊं तो आई हैव मोर देन इनफ. राइट? सो basically that's all I have to do. I have to basically store that much value somewhere, or actually stack ही. I'll use stack ताकि I can imitate recursion easily, and I will only store up to a limit that I can always go to a successor. Now what is in order successor? Possibilities क्या क्या हैं in order successor की?
Apurva, you used O1 space and ON time, OH time. Okay. How will you go back to a previous value? That is going to be interesting. Like, can you share your approach as well? I think you might be using recursion somewhere, so you are avoiding that kind of cost, that recursion stack cost here. Now, let's see what are the possibility of in order successors. अगर मैं एक नोड पे मेरा राइट चाइल्ड है, तो सबसे छोटा वैल्यू ऑफ दैट राइट नोड विल बी माई इन ऑर्डर सक्सेसर. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मैं 7 पे हूँ, सॉरी 7 पे हूँ, 7 का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या है, 9, राइट. तो इस सब ट्री का सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 9. वो क्या होगा, राइट जाके लेफ्ट 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 तक जाते रहो, जब तक लेफ्ट एग्जिस्ट करता है जाते रहो. दैट्स ऑल आई हैव टू डू. सबसे पहले क्या पॉसिबिलिटी है कि मेरा राइट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है तो उस सब ट्री का सबसे नीचे वाला, राइट. एक तो ये पॉसिबिलिटी है. सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, पेरेंटल नोड है कोई, पूरा रूट से लेके यहां तक कोई ना कोई पेरेंट यूज में है, राइट. तो पेरेंटल नोड के स्टैक से निकालना है, यहां पे वो देखते हैं कैसे है. तो इसमें 3 का सक्सेसर क्या है, 7. 3 का पेरेंट ही सक्सेसर है. 9 का क्या है, 15. ऐसे ही अगर थोड़ा और डेप्थ होता तो हो सकता है पेरेंट का पेरेंट सक्सेसर हो. राइट चाइल्ड में पेरेंट का पेरेंट सक्सेसर हो सकता है कि अगर 9 का कोई राइट चाइल्ड होता तो उसका इन ऑर्डर सक्सेसर होता 15. लेट से 9 के राइट में 10 था, 10 का सक्सेसर होता 15, राइट. तो पेरेंटल नोड रूट से लेके वहां तक पॉसिबिलिटीज जितने भी पेरेंट हैं वही दो पॉसिबल हैं. तो ऑल आई डू इज कि मैं अपने यहाँ रूट से लेके यहाँ तक आने वाले पाथ को मैं स्टोर करके रख लूंगा. लेफ्ट सॉरी राइट सब सब ट्री में तो मैं कभी भी जा सकता हूँ, राइट. दैट्स ऑल आई हैव टू डू. तो दिस इज द कोड. इफ यू लुक एट द कोड, कोड भी काफी इजी है. सबसे पहले मैंने एक स्टैक डिफाइन किया, और सबसे पहले ऑल आई हैव डन इज कि मैंने बस एक पूरा लेफ्ट 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 तक डाल दिया कि मेरे पास एक पूरी रो मिल गई, पूरी एक लिंक लिस्ट मिल गई, या फिर एक पूरा सक्सेसर्स की लिस्ट मिल गई. नाउ हैज नेक्स्ट तो सिंपल है अपना, जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाता जब तक हैज नेक्स्ट है. when I am going to take something out of the node stack, I have to push all its possible successors. तो अभी सक्सेसर मुझे निकालना है, तो राइट चाइल्ड का सबसे छोटा एलिमेंट निकालना है. और सिंस उसके बाद उसका मेरे को सक्सेसर निकालना है, तो हो सकता है वो पेरेंटल नोड हो, तो मैं क्या करूंगा, राइट चाइल्ड पे जाऊंगा. इफ राइट चाइल्ड इज नॉट नल, तो आई विल गो टिल left exist for that child. ptr is not equals to null, stack dot push ptr equals to ptr dot next और लेफ्ट. दैट्स ऑल आई डू कि राइट पे गया, उसके बाद लेफ्ट 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 जब तक पॉसिबल है डालता गया मैं स्टैक में, ताकि जब ये नीचे वाला निकले तो उसके ऊपर जा सकूं, फिर ऐसे में ट्रेस कर सकूं. इज दिस क्लियर गाइस? अ क्विक यस नो. ओके, ऑसम. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. आई थिंक यही सबसे ज्यादा. ओके, उससे पहले व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस गाइस? Correct. Sandeep, we can't say it login. It can be login, it can be more than login, but yes, the time and space complexity of this is n comma height of not n. So next is of height. That's it. Or I'm talking about one single iteration. Oh,
मेरे इटरेशन में नेक्स्ट की वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हैज नेक्स्ट तो ओवन हो गया मेरा, कि बस आई एम जस्ट रिटर्निंग एम्प्टी है कि नहीं. Space and time complexity of next operation is log h and log sorry of h and of h can be up to n, and space I'm never using more than a height, which can go to n, but I'm not using more than height. Ritik, just and to everyone, like a piece of advice slash a hack. ट्रीज के क्वेश्चन ट्राई करो, रिकर्जन से हो जाते हैं सॉल्व. रिकर्जन से नहीं हो रहे हैं, 99% चांसेस है कि वो स्टैक से कहीं ना कहीं से तो स्टैक से हो ही जाएगा सॉल्व. बीएफएस है क्यू से, नहीं तो स्टैक. सिंपल. बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप इन तीनों में से एक तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डी का क्वेश्चन हो, यू विल बी एबल टू सॉल्व. Yes, in skewed it can be on. Again, like I said, of h can go from log n to n. ओके, अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो काफी लोगों ने नहीं किया. पाथ सम 3. पाथ सम 3 क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन इज you have been given a tree, binary tree दिया हुआ है. You have to find all the sub routes or routes or paths for which the sum is given or equal to a given target. And path क्या है? Path can start from root or any node. In fact, the only कंस्ट्रेंट ऑन द पाथ इज कि वो नीचे जा सकता है. ऐसा नहीं है कि 5 के बाद 10 3 में ये कंबाइन नहीं कर सकता. इट कैन ओनली गो टू लेफ्ट, सॉरी डाउन स्टेयर्स, डाउनवर्ड्स. इट कैन ओनली गो डाउनवर्ड. ये क्वेश्चन है. इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? अ क्विक यस नो. ओके, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है. बेसिकली ऑल वी हैव टू डू इज सारे सारे पाथ्स का सम निकालना है. मतलब इसका मतलब क्या है कि मुझे 10 5 का भी निकालना है, 10 5 3 का भी निकालना है, 10 5 3 3 का भी निकालना है. एंड 3 के लिए मतलब मैं सब नीचे से बात करता हूँ. इनफैक्ट सॉरी, 3 के लिए मुझे 3 से 3 3 का निकालना है. 3 3 3 3 3 5 3 3 3 सॉरी 3 3 5 10, राइट. ये करना है. फिर अगेन सेकेंड नोड के लिए क्या होगा? 3 5 3 5 10. देन 5 के लिए क्या होगा? 5 10. सिमिलरली यहाँ पे -2 के लिए क्या होगा? -2 -2 3 -2 3 5 -2 3 5 10. तो मेरे को अपने से ऊपर वाले सारे नोड का निकालना है, राइट. ये ऑब्जर्वेशन स्लैश ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन ही है. इज दिस क्लियर? नाउ हाउ कैन वी अचीव दैट, वो देखते हैं. बेसिकली ऑल वी हैव टू डू इज we cannot move upward. यहाँ पे cannot आएगा. now हम लोग क्या करेंगे? जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, आई विल कीप अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल सम्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 10 रखूंगा. नीचे जाते हुए अगर मैं 5 पे हूं ना, सॉरी 3 पे हूं, 3 का बात करते हैं ताकि थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहे. 3 पे मैं क्या क्या रखूंगा? 10 5 का सम एंड 5 का सम, क्योंकि मैं 3 पे क्या क्या पाथ बना सकता हूँ? 3 5 3 3 5 3 5 10. सिमिलरली अगर मैं लीफ वाले 3 पे हूं तो आई विल कीप अ सम ऑफ 3 3 3 3 3 5 एंड 3 3 5 10, राइट. तो जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं, आई जस्ट स्टार्ट पासिंग दैट वैल्यूज. तो 10 से मैं 10 पास करूंगा 5 और -3 को. नाउ एंड ठीक है, पहले मैं 10 से 5 5 और -3 को 10 पास करूंगा. देन
जो नेक्स्ट वाला 3 है, जिसकी हाइट 2 पे है, जो 5 का चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड, उसको मैं क्या पास करूंगा? 5 and 15। 5 and 15 पास करूंगा मैं 3 and 2 को। देन नेक्स्ट 3 को क्या पास करूंगा? 3, 8, 18। 3 and -2 को मैं 3, 8, 18 पास करूंगा। अभी वापस जाएंगे 3 पे, सेम वही है, 5 पे आएंगे, ठीक है। 2 पे क्या था? 5 and 15। 1 को क्या पास करेंगे? 2, 7, 17। ये क्लियर हुआ? लाइक व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से? क्विक yes no guys. Okay, so all I have to do is current node plus parent, current node plus parent plus parent, current node plus parent plus parent plus parent, till the time I can go till root. That's all I have to do. And every time I hit a target, I just increment the count. कोड देखते हैं, बहुत आसान है। आप कोड देखोगे 1 मिनट में समझ आ जाएगा। So all I have to do is, एक मैंने array बना लिया list of sums. I add root value to that first, and जो मेरे पास इस वैल्यू तक पहुंचा था, लिस्ट क्या है? जो मेरे पास सम बन के आया है इस करंट नोड पे अभी तक, तो मैं उसमें करंट वैल्यू ऐड करता जाऊंगा। दैट्स इट। इनिशियली 10 को क्या मिला होगा? कुछ भी नहीं। रूट को कुछ भी नहीं मिला होगा, तो जस्ट ऐड 10, मूव ऑन। 5 को क्या मिला होगा? सिर्फ 10। तो अब मैं पहले क्या करूंगा? एक नई लिस्ट बनाऊंगा। 5 ऐड किया, देन 10 में 5 ऐड किया, तो अब मेरी लिस्ट क्या बन गई? 10 एंड 5 and 15। देन 3 पे आया। अभी मेरे पास क्या क्या इनपुट आया? 5 and 15। 3 पे मैं क्या करूंगा? 3, 8, 5 + 3 8 प्लस 15 + 3 18। तो ये मेरी लिस्ट बन गई। अब मैं नेक्स्ट चाइल्ड को ऐसे पास करूंगा। दैट्स ऑल आई एम डूइंग। इफ यू सी, दैट्स ऑल आई एम डूइंग, एंड व्हाइल डूइंग दैट I am keeping a check. If I'm reaching a target, I'm just incrementing the target. That's all I'm doing. टेक अ लुक एट दिस कोड। आई थिंक काफी आसान कोड है। अगर समझ आ जाए तो उसके बाद बहुत आसान है ये। A quick yes no guys. What is it clear? A yes or no? Okay, good to know, Ritik. Okay, since it is clear in that case, I think that's about it. I don't have anything else. Any questions that you guys have before we end the session? Actually, this is not of n, this is n square, because आप हर नोड के लिए सारे ऊपर तक जा रहे हो। n log मतलब nh है इसकी हाइट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू h है। बिकॉज आप हाइट के पार कभी नहीं जाओगे किसी भी ट्री में। ऐसा नहीं है कि आप पूरे के पूरे सब ट्री के लिए देख रहे हो। ऑल यू आर डूइंग इज अप टू अ हाइट, लाइक रूट से लेके वहां तक का पाथ। तो n इंटू h है ये, विच कैन बी n स्क्वायर इन वर्स्ट केस। Okay, so any question guys before we end the session? In the meantime, I'll do my regular thing, old habit die hard. So again, thank you so much for joining in so far, and don't forget to click on the subscribe button, and we'll definitely and click on the bell icon as well, because आधा अधूरा काम करने से कोई फायदा नहीं है। Ritik, make sure that you have clicked on the bell icon as well. If not, just click on the bell icon and say like you need notification for all the videos, and you'll start getting the videos notification as well.
So click on the bell icon, and importantly, just join a Discord channel so that you can involve in the discussion. Because a lot of time what happens is, what I'm seeing is, you guys, if there is any doubt, people post the doubt, and even before I see the question or see the doubt, a lot of you have already answered. There are very good people in the community right away. Like Akash is there, Sandeep, Sanjeev, Ritik. All of these are like, have now become pretty active, and also very well seasoned as well. So if you are starting up, or if you have any doubt, our community is very helping. So it's very good for you to start involving in the community. You don't have to wait for me to answer, or someone else to answer your query. Some or the other person will definitely answer your queries. So since there is no doubt, so what I'll do is I'll end the session right away. And if there is anything, just write it in the comments below, or just reach out to me on Discord. I'll try to answer the query. And again, thank you so much. Do subscribe to the channel if you have not done it yet. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.